ओके ਤੇ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ implications, change, transformations, change, transformation. I think it's change and transformations ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। Okay. More organizations today seek a transformation in their business. Maybe introduction हो सकता। Clearly we all aspire ना introduction तो नहीं होगा। Change is characterized by reactivity. Most of us live in the domain of change, both as individual and as organizations. Maybe introduction हो सकता है। The characteristics of transformations, AV, I don't think this would be the introduction. The implications है तो बिल्कुल ही नहीं। या तो आया या तो आया। I would actually go with this because इन्होंने individual ते organizations दी गल पहला इकट्ठे कीती है। Change is characterized by reactivity. Most of us live in the domain of change, both as individuals and as organizations. Okay, next अगर word match ते मैं जावा ते word match के हिसाब ना ਆਪਾਂ देख सकते हैं कि implications. Okay, I can see organizations over here. तीनों पहला खिंच के ले जाते उस तरफ। More organizations today seek a transformation, okay, in their businesses, yet most of them think of and talk about managing change. Okay, that makes sense क्योंकि ज़्यादा matching was नहीं change नहीं organization है। Okay, ते transformation करना चाहते हैं, ठीक है। Clearly we all aspire to live in the domain of transport. All, I don't think ना of this conflict, I don't know. I think a next sentence, the characteristics of transformation are positive and actually creative. They stem from a newfound sense of purposefulness once a higher purpose is discovered. Okay. We all, okay, next have a look. Clearly we all aspire to live in the domain of change, of transformation, even if we presently are in the domain of change. The implications of this. Okay, next sentence होना चाहिए था. Clearly, we all aspire to live in the domain of transformation, even if we presently are in the domain of change. The implications of this conflict. Conflict किदी गल हो रही है कि तुसी रहना तो चाहते हो ट्रांसफॉर्मेशन पे, पर रहंदे हो डोमेन ऑफ चेंज ते। ਤਾਂ ਆਹੀ conflict ਜਿੱਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। characteristics ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਲੈਟਸ ਸਬਮਿਟ ਇਟ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। and let's hope it's correct. Okay, देख सकते हो तुसी इत्थे organization ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ organization ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। so these are the two linking words over here. ਇੱਥੇ transformation ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ transformation ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ transformation ਇੱਕ repeated word ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ which helps you to link to the previous sentence ਔਰ ਆ conflict ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਸ sentence ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। so this is how we will be able to form the pairs. ओके, सो तुसी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो तुसी इनू कर रहे हो इस टॉपिक मतलब कोई भी रीऑर्डर कर रहे हो चाहे वो वड्डा हो कॉम्प्लिकेटेड हो ईजी हो चाहे कुछ भी हो यू नीड टू मेक श्योर कि तुसी वध तो वध उन्नू यू नो स्किम एंड स्कैन करो रिपीटेड वर्ड्स लभो क्योंकि वही तुहाडे लिंकिंग वर्ड्स भी बनणगे। सो गुड लक फॉर द टेस्ट एंड मेक श्योर कि तुसी बाकी दे रीऑर्डर्स बिल्कुल ध्यान ना करो।